અને સાથે જ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે શ્રીરામ પ્રોપર્ટીઝના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર અને ગ્રુપ ચીફ फाइनेंशियल ऑफिसर गोपालकृष्णन जे। गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो आपके कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर एक बार नज़र कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट के फ्रंट पर अगर मैं नज़र करती हूँ तो आप हमें वहाँ पे 17% हमें डाउनफॉल देखने मिला है। रेवेन्यू पे नज़र करते हैं, वहाँ पे हमें वाई यानी ईयरली हमें 8% ग्रोथ नज़र आ रहा है। बट एबिटा की नज़र बात करते हैं तो ईयरली वहाँ पे भी हमें 24% हमें डिक्लाइन देखने मिल रहा है। परंतु अगर मैं वॉल्यूम ग्रोथ की बात करती हूँ तो ईयरली 12% ग्रोथ काफ़ी अच्छा हमें देखने मिला है। सर ओवरऑल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पूरे रिजल्ट्स के ऊपर आप क्या, आपका ओवरऑल आउटकम क्या आ रहा है, आप ओपनिंग कमेंट्स क्या देना चाहते हैं? नमस्कार। तो हमारा Q3 का जो रिजल्ट था वो उसमें थोड़ा सेटबैक था। हमारा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो होते हैं which is building completion certificate that got delayed, as well as we got some delayed approvals for launch. So as a result, our launches got postponed and deferred. And Chennai floods also had an impact because Chennai floods happened just before an inauspicious month in South India called Margali. So therefore, we lost 45 days in that quarter from a launch perspective. As a result, the launches got either went to the end of December or somewhere in January. उसी वजह से हमारा वॉल्यूम Q3 वॉल्यूम थोड़ा नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से कम हुआ। 1.11 मिलियन स्क्वायर फीट सेल्स था। It could have been higher by another 2 lakh to 3 lakh square feet more. तो वहाँ एक सेटबैक हुआ, माइनर सेटबैक फॉर वन क्वार्टर। वो जो लॉस वॉल्यूम था वो हम Q4 में रिकवर कर लेंगे। Similarly, building completion का जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, which is the basic criteria for registering the units, handing over to customers. So हमारा हैंडओवर डिले हो गया क्योंकि हमारा बैंगलोर प्रोजेक्ट्स में ओसी डिले हो गया एक महीने के लिए। All the OCs came only in end of December and January. Therefore, we are able to register only in Q4. Therefore, we handed over only 750 units during that quarter. सिर्फ ये जो दो रीजन की वजह से हमारा वॉल्यूम भी थोड़ा स्लो डाउन हो गया और रजिस्ट्रेशन मोमेंटम स्लो हो गया। इसीलिए हमारा रेवेन्यू लॉस हुआ। अब जो रेवेन्यू रिकवर कर रहे, रजिस्टर करना था और रिकग्नाइज करना था, वो रेवेन्यू पोस्टपोन हो गया फोर्थ क्वार्टर के लिए। द क्वांटम ऑफ पोस्टपोन्ड रेवेन्यू इटसेल्फ इज अबाउट 150 करोड़। इसी की वजह से उसका सीधा डायरेक्ट मार्जिन इम्पैक्ट, हमारा नॉर्मल पीबीटी मार्जिन इज अबाउट 9%, 10%. So to that extent, we lost the entire P&L on Q3, which is very common in the real estate space, or especially residential real estate space. When one project occupancy or certificate or the launches get postponed, you have a setback from quarter to quarter. But on a 9-month basis, if you look at, our revenues are almost flat at 630 crores. Our EBITDA margin is actually 25%, slightly higher than last year 9 months. And EBITDA growth is about 14% at 157 crores. So this is despite a Q3 setback, we still got a very strong margin profile. We've got a reasonably good EBITDA profile. Our PBT is about 64 crores, up 11%. And our PAT is about 55 crores, 5% more on a year-on-year basis. And more importantly, last year हमारा full year का profit था 68 crores. उसके against देखेंगे तो 9 month में 55 crore पहुंच गए। So Q4 we expect it to be a very strong quarter because of 4 launches, because of revenue recognition handover. We are targeting to hand over 1,400 units, and therefore income recognition from those houses, and therefore with a similar margin profile, we should be able to have a very strong Q4 and therefore a very strong full year number. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर ये चेन्नई में जो बाढ़ आई थी उसको लेकर जो प्रभावित हुई है आपकी सेल्स में लॉन्च के प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो उसको लेकर मैं ये जानना चाहूँगी कि अब ये चीज़ें कितने सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। तो हमारा जो डिलेड अप्रूवल्स थे वो सब ऑलरेडी अंडर कंट्रोल। वी आर रेडी टू लॉन्च। वी आर प्लानिंग फॉर 4 लॉन्चेस ड्यूरिंग दिस क्वार्टर इन Q4। एंड 2 प्रोजेक्ट्स 3 प्रोजेक्ट बैंगलोर में, 2 प्रोजेक्ट बैंगलोर में, 2 प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट चेन्नई में और एक प्रोजेक्ट पुणे में। So all these projects except one, we have got approval for all the three projects.
Therefore, we should be able to launch very comfortably in Q4. सर आप काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं सप्लाई को लेकर आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि मांग को लेकर अभी क्या मांग बढ़ते हुए नज़र आ रही है, और ख़ास करके एनसीआर और एमएमआर में भी क्या आपको ये डिमांड्स कितनी नज़र आ रही है, और व्हाट अबाउट योर साउथ मार्केट के साइड पर आपकी क्या इम्पैक्ट है? So Shriram Properties focus primarily on Bangalore, Chennai and Kolkata, and now we are entering Pune, and therefore I will restrict my comment to the market demand in South. Southern regional demand strong लग रहा है, outlook भी very strong है, और especially mid market affordable में demand एकदम strong है. We think we are somewhere at the early stage of the cycle. We should see the demand continuing to remain strong, especially for mid market and affordable products for the next couple of years. So we therefore see a very strong outlook for us to continue to grow our volumes in the next 2 to 3 years. सर काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हैं, नो डाउट डिमांड्स भी धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रही है, पर अगर मैं आपके डेथ की अगर बात करती हूँ तो ग्रॉस डेथ है वो 508 करोड़ पे नज़र आ रहा है, और नेट डेथ की बात करें तो लगभग वो 447 करोड़ का है। तो आगे उसकी लेकर आपकी क्या गाइडेंस बनते हुए नज़र आ रही है? So we are focused on reducing our debt further. हमारा ग्रॉस डेट और नेट डेट थे कुछ 400 और 350 करोड़ में थे Q2 में. Q3 में we did a very large reacquisition of a joint venture from Mitsubishi Corporation of Japan, a residential project where there were 70% partners. We acquired their economic interest to make it a subsidiary, so we given them exit. As a result, we acquired some debt associated with their investment, and therefore our gross debt has gone to 508 crores. This is still lower than our debt level in March 23. March 23 में 553 crores का debt था, so on a 9-month basis we are still lower than March level. We think our debt will now start declining further. Over the next 18-24 months, we should have a declining debt, and we are targeting to be a zero net debt. So we will have sufficient cash and cash equivalent. So we are targeting to have a zero net debt in the 18 to 24 months. So gross debt itself will decline, as well as our cash and cash balance will include and improve, and therefore we think we will reach zero net debt in the next 18 to 24 months. थैंक यू सो मच सर, काफ़ी डिटेल्स में आपने हमें ये सारी बातें बताई हैं, और आने वाले क्वार्टर के लिए भी सर आपको ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच हमें इतनी डिटेल्स में आपने हमें ये सारी जानकारी दी है. અને હવે લઈ નાનકડો બ્રેક બાદ વાત કરશું 5 પૈસાના રૂચિત જૈન સાથે.